Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is IC voltage regulator solved problems. That means we'll solve few numericals related to the 3-terminal adjustable voltage regulator using IC like LM317. From the exam point of view, do remember these numericals are pretty simple, almost एक ही formula लगता है, which I have already written. So you should not skip such numericals. So without wasting the time, let us start the session. First problem is design an adjustable voltage regulator using LM317 for output voltage 5 volt to 15 volt. This is the given range of output voltage 5 to 15 volt. Draw the connection diagram. Assume R1 240 ohm, I adjustment 100 microamperes. This is the basic diagram of 3-terminal positive voltage regulator. Range दिया है 5 to 15 volt. ये वैल्यू R1 का है. This is the value of resistance R1 which is given in the question, which is 240 ohms. एक ही फॉर्मूला लगता है ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, which I have already written. V0 is output voltage, V reference is reference voltage 1 plus R2 by R1. R2 is this resistance, R2 by R1. R1 is 240 ohm plus I adjustment, which will be given in the question. Like in this question it is given 100 microamperes into R2. अब डिजाइन करना है, मतलब R1 तो ऑलरेडी दिया है, हम लोगों को सिर्फ R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है for the given range of output voltage 5 to 15 volt. Same formula I have written over here. अब दो conditions consider करना है. देखो, given output voltage is 5 to 15 volt. That means V0 minimum, that is minimum output voltage is 5 volt and V0 maximum, मतलब maximum output voltage is 15 volt. We have to make use of this formula. So first कैलकुलेशन फॉर R2 मिनिमम. जैसे मैंने बताया R1 तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ हम लोगों को R2 का कैलकुलेशन करना है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल बी कैलकुलेटिंग R2. तो पहला कैलकुलेशन करना है R2 मिनिमम. R2 मिनिमम के लिए V0 मिनिमम का वैल्यू यूज करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला. आई विल जस्ट पुट द अवेलेबल वैल्यूज. V0 मिनिमम, देखो हम लोग R2 मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है V0 के प्लेस में we need to put the value of V0 minimum, which is 5 volt, which is equals to, we know that while studying this theory part of LM317 we already discussed value of V reference is 1.25 volt. So it is 1.25 1 plus, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 minimum upon R1. Value of R1 is given, that is 240 plus I adjustment, this current is given as 100 microampere. Do remember the conversion. Microampere मतलब ये ऐसा लिखेंगे 100 जो given value as it is into micro means 10 raised to minus 6. So it is 100 into 10 raised to minus 6 into R2 minimum. अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हम लोगों को R2 मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करना है. So let us make simple manipulation. So I will be doing it like this. ये 5 as it is रखते हैं, 1.25 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं. So it becomes 1.25 plus 1.25 R2 minimum upon 240 1.25 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, प्लस दिस लास्ट टर्म as it is 100 into 10 raised to minus 6 R2 minimum. अब हम लोगों को R2 मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो ये 1.25 मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं. सो इट बिकम्स 5 माइनस 1.25 इज इक्वल्स टू, ये जो दो टर्म्स बचे उसमें से R2 मिनिमम कॉमन लेना है. सो R2 मिनिमम इन द ब्रैकेट 1.25 अपॉन 240 प्लस 100 इंटू 10 raised to minus 6. अब अपना एम है R2 मिनिमम कैलकुलेट करना है. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज R2 मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये टर्म एज इट इज 5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 अपॉन 240 प्लस 100 इंटू 10 raised to minus 6. If you solve this, then value of R2 minimum will be 706
0.436. Approximately, we can take this value as 707 ohms. This is the range, that is, unit is ohm. So, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 मिनिमम आ गया है 706.436 ओहम. ये R2 मिनिमम का कैलकुलेशन किया हमने. सेम टेक्निक R2 मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे. सिर्फ चेंजेस क्या क्या करेंगे, जहां मिनिमम वोल्टेज लेके आए वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज यूज करेंगे. मतलब इसमें चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, सेम टेक्निक आई विल बी यूजिंग. सो अब कैलकुलेशन करना है R2 मैक्सिमम का. तो यहां पे मैं लिखता हूं R2 मैक्सिमम. R2 मैक्सिमम के लिए V0 मैक्सिमम यूज करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 15 वोल्ट. तो यहां पे मैं लिखता हूं 15 वोल्ट. सो दिस बिकम्स 15. यहां पे R2 मिनिमम है, उसके बदले में R2 मैक्सिमम यूज करेंगे. रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी एज इट इज. यहां पे भी R2 मिनिमम है, उसके बदले में R2 मैक्सिमम आएगा. सो एवरीवेयर आई विल बी गेटिंग R2 मैक्सिमम. सो आई एम मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली. तो ये आएगा 15 माइनस 125. रिमेनिंग ऑल द थिंग्स आर सेम. सो ये R2 मैक्स इज इक्वल्स टू सेम इक्वेशन यू विल बी गेटिंग in this bracket. So this becomes 15 minus 1.25 upon ye same. So this answer of R2 max will be 2590.26 ohm. 26 ohm. So R2 maximum is equals to 2590.26 ohm. अब ये डायग्राम में दिखाना कैसे है. वी हैव गॉट टू रेंजेस. सो रिलेटेड टू दिस वी हैव टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड वैल्यूज. जैसे ये दो वैल्यूज, ये रेंज आ गया. मतलब वेरिएशन ऑफ R2 विल बी 706.4 to 2590.26. सो आई विल बी यूजिंग वन फिक्स रजिस्टर ऑफ 700 ओहम एंड वन वेरिएबल रजिस्टर ऑफ 2 किलो ओहम, मतलब 2000 ओहम. तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके 2700 ओम आ रहा है, विच विल सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट. तो यहां पे R2 दिखाया है, वहां पे चेंजेस डायग्राम में ये करना है. यहां पे एक फिक्स रजिस्टर होगा 700 ओहम्स का, दूसरा एक वेरिएबल रजिस्टर यूज करेंगे whose value is 2 kilo ohm. So these are the standard values. Then by varying this potentiometer we can adjust R2 minimum first at 706. Then we will again vary this potentiometer, this variable resistor, and we will adjust the value 2590.26 so that we'll get the variable output voltage 5 to 15 volt. Next problem, determine the range over which output voltage can be varied in LM317 if R1 240 ohm, R2 5 kilo ohm potentiometer. Assume I adjustment 100 microamperes. Draw typical connection diagram. अब देखो, like the previous sum, R1 is given as 240 ohm. This R2 is 5 kilo ohm potentiometer, means it is variable resistor. फॉर्मूला वही यूज करना है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो आई विल रीराइट द फॉर्मूला. सो इट इज V0 is V reference and we know that value of V reference is 1.25 volt plus I adjustment, same formula I am writing, into R2. R2 is given as 5 kilo ohm, means range of R2, ये potentiometer है. This 5 kilo ohm indicates maximum value, so you can say range is from 0 to 5 kilo ohm, and we know that 5 kilo ohm is 5000 ohm. This is the range of R2. Now let us first calculate value of V0 minimum. तो V0 minimum का कैलकुलेशन करने के लिए जहां पे भी देखो R1 फिक्स्ड है, R1 is given as 240 ohm, R2 वेरिएबल है. V minimum के लिए R2 का मिनिमम वैल्यू यूज करना है, which is 0. So I will simply put the values. V reference is 1.25, 1 plus R2 minimum मतलब 0 upon R1 240 plus I adjustment is 100 into 10 raised to minus 6 into R2 minimum 0 है, क्योंकि मिनिमम का कैलकुलेशन कर रहे हैं. So this entire term become 0. This term becomes 0. So this answer of V0 minimum is equals to 1.25 volt.
So this is the value of V0 minimum. Same way we will calculate the value of V0 maximum. सेम लॉजिक यूज करना है. देखो V0 मैक्सिमम के लिए ये V रेफरेंस 1.25 एज इट इज 1 प्लस. अब यहां जहां पे भी R2 का वैल्यू है वो R2 मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है. R2 मैक्सिमम वैल्यू इज 5 किलो ओहम, सो इट इज 5000. ये फॉर्मूला में R2 जहां पे वहां पे R2 मैक्सिमम का वैल्यू पुट करना है विच इज 5000 अपॉन R1 दैट इज 240 प्लस आई एडजस्टमेंट 100 माइक्रो एम्पियर मतलब 100 into 10 raised to minus 6 into R2. R2 is again R2 maximum which is 5000. Then solve this using calculator. So this answer will be V0 maximum is equals to 27.79 volt. That means range of output voltage will be from 1.25 volt to 27.79 volt. दिस इज द टिपिकल कनेक्शन डायग्राम. यहाँ पे R2 के बदले में सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर यूज करना है जिसका वैल्यू लिखना है 5 किलो ओहम. इफ यू वांट टू ड्रॉ प्रैक्टिकल डायग्राम, ये तो बेसिक डायग्राम हो गया, इतना सफिशिएंट है. स्टिल इफ यू वांट टू ड्रॉ द प्रैक्टिकल डायग्राम देन वी नो दैट प्रैक्टिकली इनपुट साइड में कैपेसिटर दिखाना पड़ेगा जिसका टिपिकल वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरेड. ये R2 instead of showing R2 over here I will draw the new diagram of R2 like this. ये ऐसे भी दिखा सकते हो आप. It is variable resistor R2. In this case it is 5 किलो ओहम. This terminal is grounded और यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर यूज करेंगे जिसका वैल्यू टिपिकल वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरेड. Similarly at the output side I will be using one more capacitor whose value is 0.1 microfarad. This is the practical circuit. But as I said, basic circuit is also more than sufficient. So this is the way how to solve the numericals as far as this LM317 is concerned. Next problem, calculate range of R2 for the output voltage 0 to 20 volt. This is the given range of output voltage. Assume R1 270 ohm. अब देखो इसके पहले के न्यूमेरिकल में R1 was having a standard value that is 240. Now given value is 270 ohm. I adjustment 100 microamperes. Draw typical connection diagram. Everything is same. Only value of R1 is changed. So it is similar to the first numerical. There are slight variations. So we will be making use of same formula. So I will rewrite the formula. So it is V0 is V reference. Value of V reference. Standard value 1.25 in the bracket 1 plus R2 by R1 plus I adjustment into R2. Like the first numerical, we have to consider the output voltage range. Given range is 0 to 20 volt. Means minimum value that is V0 minimum is 0, maximum is 20. तो पहले मिनिमम का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब जहां पे V0 है वहां पे मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं. सो लेट अस पुट मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 इक्वल्स टू 1.25 1 प्लस यहां पे लिखता हूं मैं R2 मिनिमम अपॉन R1. Why R2 minimum? Because we are considering minimum value of output voltage plus I adjustment that is 100 into 10 raised to minus 6 माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6 into R2. ये as it is आएगा. R2 means R2 minimum. So let us simplify this equation. So this can be written as 0 is equals to 1.25. 1.25 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में plus 1.25. हाँ, one more thing, you can well put the value of R1. R1 is given as 270 ohm. तो यहाँ पे ही put करते हैं. So it is 270 ohm. So it is 125 upon 270 into R2 minimum plus 100 into 10 raised to minus 6 into R2 minimum. Therefore 0 is equals to R2 minimum कॉमन लेते हैं. सो R2 minimum in the bracket 1.25 plus 1.25 upon 270. See, one more change. Instead of writing this equation, we can well write it like this. ये 1.25 LHS में ट्रांसफर करेंगे, so it becomes minus 1.25 equals to. देखो ये पहले यहाँ पे ट्रांसफर किया. R2 मिनिमम कॉमन लेते हैं आप.
So it becomes R2 minimum in the bracket 1.25 upon 270 plus 100 into 10 raised to minus 6. Therefore, R2 minimum will be this value, means minus 1.25 upon 1.25 by 270 plus 100 into 10 raised to minus 6. Actually, if you solve this, then you will get some value which will be negative because of this minus sign. Resistance cannot be negative, so consider this value as 0. That means minimum value of R2, that is R2 minimum, is 0. Why? Because due to this negative sign you will get some negative value, but negative resistance are not allowed, so I am considering R2 minimum is equals to 0. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये R2 मिनिमम का हो गया, R2 मैक्सिमम का कैलकुलेशन करना है. फॉर दैट वी विल टेक दिस वैल्यू एज 20 वोल्ट. तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में मैं चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे 20 वोल्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा R2 max, this will be R2 max. So again same changes I am making at both sides. So this is R2 max, this will be 20. So it becomes now 20 minus 1.25. ये 1.25 LHS में शिफ्ट किया. So this is R2 max taken common. So final equation of R2 max is 20 minus 1.25 upon this thing. Baki as it is है. So if you solve this using calculator, then this value will be 3964.36 ohm. That is 3.96 kilo ohm. So this is the range. So R2 max is now 3964.36 ohm. This is the range of R2. It is also asked to draw the typical diagram. You can well draw this diagram, or you can draw the basic diagram without using capacitors. But I am keeping this diagram as it is. यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज करना है. देखो मैक्सिमम वैल्यू 3964.36 आ रहा है. So you can well use R2 potentiometer as 5 kilo ohm, like the numerical 2. So this is the way how to solve the numerical if R1 is having some different value. Now let us solve one numerical related to negative voltage regulator, that is LM337. The given problem is calculate minimum and maximum output voltage range for LM337 regulator, voltage regulator. If R1 is 240 ohm, I adjustment is 50 microamperes, R2 is 3K potentiometer. This is the diagram corresponding to LM337, which is negative voltage regulator. The typical values we have already discussed. C1 is 0.1 microfarad, C2 10 microfarad, C3 again 10 microfarad. This is R2 whose value is 3 kilo ohm, which is given in the question. R1 240 ohm, which is also given in the question. This is the formula, same formula we will be using. What is the change? Only difference is this value of V reference is now minus 1.25 volt. That is the only difference. Otherwise remaining all calculations are same. For example, जैसे इस न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने. I have referred same formula, only I have put the values of value of reference, that is minus 1.25. Here R2 upon R1, R1 is 240 plus I adjustment, that is 50 microamperes. So it is 50 into 10 raised to minus 6 into R2. R2 as it is. V minimum. To calculate V minimum, we have to make use of minimum value of R2. In the given question, R2 is 3 kilo ohm. 3 kilo ohm is maximum value. It is a potentiometer. So minimum value will be 0. Maximum will be 3K. That means 3000 ohm. तो minimum value 0 put किया. We also similar numerical. सिर्फ sign में change है. Otherwise every step is same. So if you do this calculation, this answer is minus 1.25 volt. Same way मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे R2 मैक्सिमम पुट करेंगे, दैट इज 3K, मतलब 3000 पुट किया यहाँ पे. एंड रिमेनिंग थिंग्स, आई मीन यहाँ पे भी आई हैव पुट 3000, सो रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. आंसर विल बी minus 16.72 volt. Means range of output voltage will be from minus 1.25 to
-16.72 वोल्ट। तो ये कंसेप्ट याद रख लो, अगर 337 LM337 का न्यूमेरिकल है तो सिर्फ रेफरेंस वोल्टेज माइनस लेना है, रिमेनिंग ऑल स्टेप्स ऑल कंसेप्ट्स विल बी एज इट इज। सो I have covered all possible numericals as far as these 3-terminal IC voltage regulators are concerned. So that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.